myself, PC Pandey, Tagore Public School, Surajgarh. I do know that online classes will be continued delivered by Tagore Public School. You see my video continue regular and like, share and subscribe. Today I tell you about the astronomical telescope. Astronomical telescope is used to see the heavenly objects, or we can say that astronomical telescopes are used for seeing the ethereal bodies like as stars. When we see in nights, then stars are twinkling and appears too close. So, for seeing distinctly, we use telescope. टेलीस्कोप के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेस्ड किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए यूज करते हैं। इसमें एक मेटालिक ट्यूब होती है। इस मेटालिक ट्यूब के दोनों साइड दो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड होते हैं। दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक एक्सिस पे होते हैं। इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसके अपर्चर और फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है। जो लेंस आई की तरफ होता है उसके अपर्चर और फोकल लेंथ की वैल्यू कम होती है, उसे आई पीस कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आई की तरफ होता है उसे आई पीस बोलते हैं। तो इसमें एक मेटालिक ट्यूब होती है। देयर इज ए मेटालिक ट्यूब on both sides of this tube. Two convex lenses are placed which are coaxially. The lens which is towards the object side is known as objective. A lens which is towards the eye side is known as eyepiece or eye lens. This is known as eye piece. So here we see that these two convex lenses are coaxially. By rack and pinion method, the distance between objective and eyepiece it changes, and the distance between both lenses is known as tube length. Thus, aperture and the focal length of objective is more than
aperture and focal length of eyepiece. Or we can say that in astronomical telescope, the focal length and the aperture of objective is more than aperture and focal length of eyepiece. By rack and pinion arrangement, distance between both lenses is changed. There is astronomical telescope, astronomical telescope is used to see the heavenly object in astronomical telescope. In astronomical telescope, there is a metallic tube on both sides of this tube, two convex lenses are placed, which are coaxially, the size or the aperture and focal length of the objective is more than the aperture and focal length, more than the aperture and focal length of the eyepiece. तो इस तरह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और अपर्चर की वैल्यू आई पीस के फोकल लेंथ और अपर्चर से अधिक होता है. Now I tell you about principle and working function of the telescope. Principle and working function. Principle and working function. First of all, when light rays falls on the objective from distant object, then its real and inverted image is formed. This image is behave as virtual object for eyepiece. So we adjusted eyepiece displacing left and right as such that
the image formed by the objective lies between optical center and focus of eyepiece, so that its virtual image is obtained. So first of all, we draw ray diagram. पहले इसका रे डायग्राम बताते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव की साइज लार्ज होती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स से लाइट रेज इस ऑब्जेक्टिव पे फॉल होती है। Let object is placed at infinite distance. So a parallel beam of light falls on the objective from distant object. Here we suppose that object is at infinite. So ray of light coming parallel after reflecting from the objective, these are meet at the focal plane. So the image is formed at the focus of objective. Here, A dash B dash is the image of the distant object. जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है उसका इमेज पहले ऑब्जेक्टिव से इसके फोकस पर ऑब्टेन होता है। यही इमेज ए डैश बी डैश आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। दिस इमेज ए डैश बी डैश बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। Here, the aperture and focal length of the eyepiece is small. This is eyepiece. This object A dash B dash is behave as virtual object for this eyepiece. Objective से infinite पर placed ऑब्जेक्ट का जो इमेज ए डैश बी डैश के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, यही इमेज ए डैश बी डैश आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब ए डैश बी डैश का वर्चुअल और लार्ज इमेज ऑब्टेन करने के लिए यहाँ दो लाइट एज लेते हैं। वन लाइट एज को इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, इनर लाइट एज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं। ये लाइट रेज आई पीस से रिफ्लेक्शन के बाद
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। इनको बैक साइड में जब पीछे ले आते हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां ये देखते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं, तो इनको बैक साइड पर ड्रा करने से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो large and virtual image is obtained by the eyepiece as A double dash B double dash. Here angle subtended at the eye directly by distant object is alpha. When this angle is alpha, so this angle also alpha, and angle subtended on eye by final image is beta. Here we see that this angle beta is made in right angle B double dash A double dash O double dash O dash. And also this angle beta made in triangle B dash A dash O dash. But here we see that triangles B double dash A double dash O dash and B dash A dash O dash, these are similar. So here we consider this triangle B dash A dash O dash for obtaining tan beta as the angle made by final image at the eye. This image A dash B dash is found at the focus of objective, so this distance is equal f naught, and A dash B dash is behave as object for eyepiece, so this distance is UV, and A double dash B double dash is the final image found by the eyepiece, so this distance is VE. तो eyepiece से इस फाइनल इमेज A double dash B double dash की डिस्टेंस V और eyepiece से ऑब्जेक्ट A dash B dash की डिस्टेंस UV होती है। तो इस तरह से हम रे डायग्राम को ड्रा करते हैं। अब इसके मैग्नीफाइंग पावर के बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर of the telescope. The magnifying power of the telescope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by final image to the angle subtended at eye by the distant object placed at infinite. So m is equal
beta by alpha. Here we see that these angle alpha and beta are small. So this is written as m is equal tan beta by tan alpha. So first of all we find value of tan beta and tan alpha. From the right triangle B dash A dash O dash, we obtain value of tan beta. So from right triangle B dash A dash O dash, B dash A dash O dash, tan beta is equal A dash B dash minus A dash B dash by A dash O dash minus A dash O dash, or this is equal to tan beta is equal A dash B dash by UE, and similarly tan alpha is equal from the right angle B dash A dash O, from right angle B dash A dash O, tan alpha is equal minus A dash B dash minus A dash B dash by OA dash. इन राइट ट्रायंगल B dash A dash O dash से tan अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, जिसमें A dash B dash परपेंडिकुलर और OA dash बेस की तरफ बिहेव करता है. A dash B dash वर्टिकली डाउनवर्ड है, so this distance is taken as negative. OA dash, this distance is on right side, so this is taken as positive. So tan alpha is equal minus A dash B dash by OA dash. Now putting value of tan alpha and tan beta, we can find out the magnifying power of the telescope. So tan beta is equal minus tan beta is equal A dash B dash by UV by minus A dash B dash by OA dash, and here we can write tan alpha is equal minus A dash B dash by the distance OA dash is equal F naught. So this is equal F naught, and here we see that A dash B dash is cancelled. So M is equal minus F naught by UV, or this can also be written as M is equal minus F naught into 1 by UV. This is इक्वेशन फर्स्ट. तो इस तरह इस टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू m इज इक्वल माइनस एफ नोट इंटू 1 बाई ईवी के फॉर्म में ऑपरेट होता है. अब यहाँ दो कंडीशन राइज होती है. पहली कंडीशन यह है कि जब फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन मीन्स डी डिस्टेंस पे ऑपरेट हो, और सेकेंड कंडीशन है जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे ऑपरेट हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी व्हेन
final image is obtained at the distance d. First, when final image is found at distance d, that is at the least distance of distant vision. जब फाइनल इमेज d डिस्टेंस पे ऑब्टेन होता है तो यहाँ v की वैल्यू d लेते हैं. देन बाय लेंस फार्मूला we know that according to Lenz formula 1 by f is equal 1 by v minus 1 by u, but here we see that final image is found by eyepiece. यहाँ ये देखते हैं कि फाइनल इमेज a डबल डैश b डबल डैश eyepiece के द्वारा बन रहा है. तो यहाँ पर f के प्लेस पे fi, v के प्लेस पर v और u के प्लेस पर uv यूज करते हैं, because fi is the focal length of eyepiece, v is the distance of image found by eyepiece, and uv is the distance of object from the eyepiece. But the value of v is equal d, and final image is found at left side. So this distance v is equal to minus d, and also ev is equal minus uv. So putting this value in this equation, we obtain 1 by fi is equal 1 by minus d minus 1 by minus uv. So this is equal to 1 by fi is equal minus 1 by d plus 1 by uv, or this can be written as 1 by fi is equal, or 1 by fi plus 1 by d is equal 1 by uv. Now here we put the value of m is equal minus f naught into 1 by uv. This is equation first. This can also be written as 1 by 1 by fi into 1 plus fi by d. This is equal 1 by uv. When taking 1 by fi common, so this matter is written as such 1 by fi into 1 plus fi by d, and putting the value of 1 by uv in equation first. From equation first we get magnifying power of the telescope m is equal minus f naught into 1 by fi into 1 plus fi by d. Or this can also be written as minus f naught by fi into 1 plus fi by d. This is the
formula or the magnifying power of the telescope when final image is format D. So this is written as equation second. The tube length L is equal. The distance between both lenses is known as tube length. So here we see that this distance is FO and this distance is UV. So total distance between both lenses become F naught plus UV mod UV. Because this distance is left side, so this is negative. So here we can write on the place of UV as mod UV. So this value become positive. Now we obtain magnifying power of the telescope when final image is format infinite. जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस बनता है तो इसके मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी, अब उसे ऑब्टेन करते हैं. Second, when final image is formed at infinite. जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट बर्तन होता है, since we know that final image is obtained at infinite by the convex lens when the object is placed between the focus and optical center. Object A dash B dash इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है. इसका फाइनल इमेज इनफाइनाइट का ऑब्टेन करने के लिए आई पीस को राइट साइड डिस्प्लेस करते हैं जिससे ए डैश बी डैश आई पीस के फोकस किया जाए. उस कंडीशन में ये डिस्टेंस यूवी एफ आई इक्वल जाता है. तो इस तरह फाइनल इमेज ऑन इनफाइनाइट पे ऑपरेट करने के लिए डिस्टेंस यूवी इज इक्वल एफ आई इक्वल होता है. बिकॉज वी नो दैट when any object is placed between optical center and focus of the convex lens, then its image is format infinite. So adjusting eyepiece as such that A dash B dash is lies between optical center and focus of the eyepiece. So its final image is format infinite. Here we put U is equal to Fi. So from equation first we get magnifying power m is equal minus f naught by fe. Where FO is the focal length of objective and Fi is the focal length of eyepiece. This is equation third. And tube length L is equal F naught plus Fe. This arrangement is known as normal arrangement. In normal arrangement, object is placed at the focus of eyepiece, so its image is format infinite. So we can say that when final image is formed at infinite, so this is known as normal adjustment for the telescope. Hence it is clear when final image
is formed at infinite. So, when final image is formed at infinite by the telescope, so this adjustment, so this is known as normal adjustment. Normal adjustment. अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनता है तो यह एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है। तो इस तरह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को लार्ज फॉर्म में क्लियर देख सकते हैं। और इक्वेशन सेकेंड और थर्ड के हेल्प से इसके मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।